Good evening, guys. So it's weekend, Sunday finally. Yesterday I took off because yesterday I had some throat issue. I was not able to speak properly, but presently I'm good. I'm back with my trading, I'm back with my voice. So let's get into action. So, as you can see, volume is good, liquidity is good, chart has been flat, but there is some movement. So, seeing that movement only, I came live. So let's just open the chart and see what the chart is saying tonight. And this is the point where we had booked our profit, and from there, market has fallen a lot. From support to, it is taking a good support, but EMA crossover is not clear. It's on the consolidation zone. It's still range bound. So let's see. But if you ask about my long-term view in BTC, it's going way above 30,000. It's presently trading at $29,423. But after crossing 30,000, it has a huge up move potential. So if you are planning for staying in this for at least 1 or 2 years, you'll get to see great results if you start investing now. So we'll switch to 5 minutes view, and then we will see how can we trade today. If we get a trade today, we'll try to trade, or else we'll just watch the market, what the market is doing. So in 1 hour time frame also, there was good buying volume, and then there was a sell off. After sell off, it's in consolidation. Then again, there is a good buy zone, and again it's in consolidation. Buying is coming right now since last 2 hours, so that's a good news for us. Uh, Coming to 5 minutes time frame, we'll see how we can trade today. So last 3 hours has been very good. We see some volatility in last 3 hours. So we'll just follow the EMA lines and see what it does. And based on that, we will plan whether we can trade today or not. Trade. So not much happening. Taking good support from EMA 9. So we will just wait whether to see whether the market crosses this level or not. If the market crosses this level, this can be a good buy zone after retracement. So once the market crosses this line, we'll wait for the market to touch back EMA, and from EMA to this, it will be our first target, and after this, 29,489 will be our second target. So that way we can trade today. But for now, let's just wait. The closing of this candle is going to be very vital for us. Until and unless this candle closes, we will not be able to see how much or how we can do it today. So once the candle closes, then only we will be able to see what is happening in the market. So till then, we'll just have to sit straight and relax. So 293 to 489 is our range. Within this range, we will trade today. Whatever trade we get, we'll try to capture. Cool. The market is coming down. That's a good sign. Very good sign. You can see the inside candle. The last candle has been the last candle formed is an inside candle. Because the previous candle low, neither high, nothing could be broken. So this candle is invalid. We cannot take a trade based on the formation of this candle. Next candle, we'll have to wait how it works, and after that, we will see how we can trade in this point. ये अगर ब्रेक होता है, सो यहाँ पे हमको एक अच्छा डाउन मूव देखने को मिलेगा. सो विल जस्ट वेट. येलो लेवल क्रॉस करेगा, अच्छा डाउन मूव देखने को मिलेगा. लेवल क्रॉस करेगा तो मार्केट गिरेगा. मैं बोला था मार्केट नीचे आएगा. लेवल क्रॉस किया, मार्केट नीचे आ रहा है. एग्जैक्टली ऐसे ही करके तुमको जो चार्ट में दिखता है, वो अगर तुम इम्प्लीमेंट करते हो, तुमको पता चल जाएगा कि नेक्स्ट मोमेंट में क्या होने वाला है. अगर तुमको ये पता चल जाए कि नेक्स्ट कैंडल कैसा फॉर्म होने वाला है, उसका मूवमेंट क्या होने वाला है, तुम्हारा लॉस भी उतना ही कम होगा. तुम उस हिसाब से अपना रिस्क मैनेज करके अपना ट्रेड कर पाओगे. डाउन साइड क्रॉस कर चुका है. मैंने जो लेवल मार्क किया था वो भी क्रॉस कर चुका है. मार्केट नीचे आ गया. अगर नहीं बनता है, नीचे की तरफ जाता है, तो नीचे साइड में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है. लेकिन EMA 15 को क्रॉस करना होगा. द EMA 15 शुड क्रॉस. जब तक ये EMA 15 को क्रॉस नहीं करेगा, हम ट्रेड नहीं लेंगे. एक बार क्रॉस कर जाए, हम ट्रेड में एंटर कर जाएंगे. क्रॉस कर दिया, वी कैन गो फॉर ए शॉर्ट पोजीशन हियर.
we have taken the trade at the cross of 15 EMA. So let's see how far our trade goes. We have a very small stop loss of $24 and we have a relatively big target. पे $7, we are at $7 प्रॉफिट. ठीक है, तो यहाँ पे बाइंग आया, बाइंग आने के बाद यहाँ से ये लेवल से 29,422 से रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन लेके फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गया. जो मैंने लेवल मार्क किया था हाई वो 29,449 का है, वहां से फिर से रिजेक्शन लिया, मार्केट नीचे आया, फिर ये लेवल को फिर से क्रॉस नहीं कर पाया 29,421. तो यहां पे जब इनसाइड एक कैंडल बना, इसका नेक्स्ट वाला कैंडल जब यहां पे भी क्रॉस नहीं कर पाया फिर से, सो ईएमए को भी ये तोड़ दिया. 15 ईएमए को जब क्रॉस किया, सो देयर इज सिंपल लॉजिक दैट इट विल गो डाउन. वेयर आर $10, अच्छा चल रहा है, यू जस्ट लेट मी नो. $12, $14, हाई ब्रदर, $30, $33, $40. तो यहां से हमको फिर से बाइंग देखने को मिल रहा है, लेकिन हमको डरना नहीं है. $42, क्या करे, टारगेट बढ़ा दे 48, 52 एंड टारगेट हिट होने वाला है. वी आर अबाउट टू हिट आवर टारगेट. डन. $55 में ट्रेड बंद हो गया. वी हैव जस्ट मेड $55 और मार्केट फिर से नीचे जा रहा है. सी दैट्स हाउ योर लेवल्स वर्क. वी हैव जस्ट मेड $55 लाइव अगेंस्ट $24 स्टॉप लॉस. विद इन कितना मिनट हुआ लाइव स्ट्रीम चलते हुए, लेट मी नो. एंड ये देखो लेवल्स, इसको कहते हैं लेवल्स. यहां से मार्केट फिर से रिट्रेस कर गया. वी हैव बुक्ड $55 प्रॉफिट लाइव ऑन दिस ट्रेड एंड एग्जैक्टली एट माई लेवल्स. जहां पे लेवल मैं दिया था वही से मार्केट रिट्रेस कर रहा है. सो इफ यू प्ले बाय द रूल्स, अगर फिर से नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है बट कोई बात नहीं, हमको फोमो में नहीं आना है, हमको फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं करना है. We have already made $55 in this trade. That's good enough. वीकेंड में संडे के दिन $55 within few minutes is great. हमने जिस कैंडल पे ट्रेड लिया, 2 कैंडल पे हमने ट्रेड क्लोज कर दिया. Within 3 candles, within 15 minutes we have booked our profit. 20-25 मिनट्स में पैसा डबल करना है तो सभी आ जाना. जिस कैंडल ने ईएमए क्रॉस करा, उस कैंडल पे वी हैव टेकन एन एंट्री एंड वी हैव बुक्ड आवर प्रॉफिट्स विद इन 15 मिनट्स. और 15 मिनट्स में हमने सबसे बड़ा कैंडल जो बनाया है लास्ट कुछ घंटे में, वी हैव कैप्चर्ड दैट. सो दैट इज हाउ यू शुड ट्रेड.